briefly explain the two processes involved in the formation of a p-n junction. Okay, so in p-type semiconductor we have holes more. Okay, so number of holes are more, and in n-type there are more electrons. Okay, so now when both of them they are brought together, so what happens is the electrons they travel to the left side, like to the p type, to the p type, and then the holes are actually going to the n types, because if electron goes, automatically there is a hole created. So therefore we have hole diffusion and electron diffusion, which is the diffusion current. But now since, see, n type, what is happening, that is there are pentavalent atoms, so that means they are having 5 electrons in their outer shell. So now 4 electrons they are like having valency, they are making bonds, पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, तो that electron it moves here. So when this electron moves here, automatically what happens is that there is a positive charge created here, and here electron goes, so therefore negative charge is there. So therefore there is a potential difference across the p-n junction. Now due to this potential difference, if you see, the electron here will go towards n type. Okay, so this is the drift. Okay, this is the drift current. Now let us go to NCERT and see. Consider a thin p-type silicon semiconductor wafer by adding precisely a small quantity of pentavalent part of it. Okay, so now two important processes occur during the formation of a p-n junction. What is that? Diffusion and drift. We know that in an n-type semiconductor, the concentration of electrons, that is the number of electrons per unit volume, is more compared to the concentration of holes. ठीक है, तो ये p type है, n type है. n type में क्या है, electrons ज़्यादा है, p type में holes ज़्यादा है. Okay, so now similarly in a p type, concentration of holes is greater. So during the formation of a p-n junction and due to the concentration gradient across p and n sides, holes diffuse from the p side to the n side. ठीक है, तो holes इधर ज़्यादा है तो p से n के तरफ आ रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो n से p के तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. That is diffusion current. Okay, this motion of charge gives rise to diffusion current across the junction. ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, ये डिफ्यूजन करंट हो गया. ओके, नाउ गोइंग अहेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम n to p, इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन द n साइड. ठीक है, तो दोनों p टाइप और n टाइप दोनों जो है दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन जब p टाइप व्हेन इट लूजेस अ होल और n टाइप व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, both of them they get charged. So therefore it is mentioned when an electron diffuses from n to p, it leaves behind an ionized donor on n side. ठीक है, ionized तो positive, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है तो पॉजिटिव हो जाएगा. This ionized donor, that is positive charge, is immobile as it is bounded to the surrounding atoms. As the electrons continue to diffuse from n to p layer, a layer of positive charge or a positive space region on the n side of the junction is developed. तो यहाँ पे देखिए, here we can see this is the positive charged region, okay, which is there on the n side. क्योंकि electrons इधर से गया है तो electrons चला गया तो इसलिए positive charge हो गया. Similarly, when a hole diffuses from p to n, due to the concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor, that is negative charge, which is immobile. As the holes continue to diffuse, a layer of negative charge or negative space charge region on the p side of the junction is developed. तो जैसे जैसे अब देखिए क्या हुआ, इधर excess, इधर जो है था एक्सेस होल्स थे तो वो इधर आ गए, इधर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे इधर आ गए, है ना. और बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट नाउ बोथ ऑफ देम दे कंबाइन. इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा था इधर, यहाँ पे होल्स था, तो इलेक्ट्रॉन जाकर के होल में सेटल हो गया. तो देयरफॉर ना होल बचा
और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन बचा. लाइक शो यू एन एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे एक होल था और यहाँ पे क्या है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाकर के होल में सेटल हो गया, तो नाउ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज नो होल आल्सो. सो देयरफॉर it gives rise to a region which is known as depletion region. Okay, the space charge region on the either side of the junction together is known as the depletion region, as the electrons and holes taking part in the initial movement across the junctions depleted the region of its free charges. Okay, the region is depleted. The thickness of the depletion region is the order of 1/10 of a micrometer. Due to the positive space charge region on N side and negative space charge region on the P side of the junction, an electric field develops. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो जाहिर सा बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव. ओके, ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रॉन ऑन द P side of the junction moves to the N side. अब क्योंकि देखिए ध्यान से, ठीक है, नाउ क्योंकि दिस साइड इट बिकम्स यू नो लाइक इट बिकम्स एन टाइप था, इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया होल में. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो इसके कारण देयर इज दिस इज द EMF डेवलप्ड, जो कि यहाँ पे दर्शाया हुआ है. अब ये EMF के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देखिए इधर जा रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस EMF के कारण इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट. ओके, एंड ऑफ कोर्स द होल्स विल गो टू द लेफ्ट साइड. ओके, so due to this field, an electron on the P side of the junction moves to N side and a hole on the N side of the junction moves to P side. The motion of the charge carriers due to this electric field is called drift. Thus a drift current which is opposite in direction to the diffusion current starts. Diffusion के opposite हो गया drift. And what happens is, initially diffusion current is large, drift current is small, but as it continues, what happens is that the diffusion current equals the drift current. Thus a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium there is no net current. Okay, so these are the two phenomena or the two processes which are happening in the formation of PN junction. Okay, diffusion and drift. Diffusion is due to concentration gradient, है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एक तरफ होल्स ज़्यादा है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स गो and towards the holes and holes goes towards the electrons. Okay, like N type से electrons जाएगा P type के तरफ, P type से holes जाएगा N type के तरफ due to concentration gradient. ठीक है, but second process which is drift current, that is due to the potential difference which is generated, okay, due to the movement of the electrons and holes. So these are the reports. Thank you.